हाय, मैं हूं आपका दोस्त करण। फ्री मल्टी एक्टिविटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए लेटेस्ट वीडियो और न्यू ऑफर्स सबसे पहले देखने के लिए। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ लिख नहीं पाते, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना, पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लेना। अगर ऐसे ही पढ़े रहोगे वर्तमान में तो आगे चल के भविष्य में और पढ़ेगी। प्रपोजिशन इन, ऑन, आउट ऑफ, बिहाइंड, बियॉन्ड, टू, etc। तो 79 आगे हम प्रपोजिशन सीखेंगे। प्रपोजिशन का काम होता है कि सब्जेक्ट का लोकेशन, डायरेक्शन, प्लेस ये वर्ड दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, तो जैसे गाड़ी में, गाड़ी मध्ये, सेम उसी तरह से जैसे हिंदी मराठी उस तरह से आपको इंग्लिश नहीं लिखना है, यहाँ आपको ध्यान देना है। जैसे गाड़ी में, गाड़ी मध्ये, कार इन, ये रॉन्ग सेंटेंस है। सो लास्ट में जो में है, मध्ये आहे, वो कभी भी स्टार्टिंग में लिखना है इंग्लिश में, जैसे इन कार, कार इन नहीं, इन कार। और एग्जाम्पल, जैसे गाड़ी को, गाड़ी ला, कार टू नहीं, को जो है वो आगे लिखना है वर्ड के आगे, तो टू कार, गाड़ी को, कार टू ये रॉन्ग है। जैसे गाड़ी के लिए, गाड़ी साठी, तो यहाँ पे कार टू नहीं लिखना है। जैसे एज इट इज, जैसे हिंदी है मराठी है वैसे नहीं लिखा जाता है, इंग्लिश थोड़ा उल्टा लिखना होता है। तो यहाँ पे लिए, साठी या आगे आपको लिखना है फॉर कार। वंस अगेन आपको मैं बता देता हूँ, गाड़ी में, गाड़ी मध्ये, कार इन वैसे नहीं लिखना है, में स्टार्टिंग में लिखना है, जैसे इन कार, टू कार, फॉर कार, ये ग्रामेटिकली सही है। तो यहाँ पे और एग्जांपल है, गाड़ी के, सॉरी, राम के गाड़ी में, तो यहाँ पे और एग्जांपल है, राम के गाड़ी में, रामच्या गाडीमध्ये। तो यहाँ पे राम, रामच्या ये मैंने आगे लिखा है, लेकिन इंग्लिश में आपको, जैसे राम्स कार इन ये रॉन्ग हो गया, तो इंग्लिश में आपको इन कार के बीच में लिखना होता है, इन राम्स कार, इन राम्स कार। तो राम के, रामच्या के और चा का मीनिंग होता है आपको अपोस्ट्रोफी दे के एस लिखना है, तो यहाँ पे हो जाता है इन राम्स कार, राम के गाड़ी में, रामच्या गाडीमध्ये। तो यहाँ पे है राम के पिताजी के गाड़ी में, रामच्या वडिलांच्या गाडीत किंवा गाडीमध्ये। तो यहाँ पे राम के, रामच्या ये मैंने स्टार्टिंग में लिया है, इंग्लिश में आपको नहीं लेना है, राम्स नहीं बोलना है। तो यहाँ पे कैसे लिखना है, इन राम्स फादर्स कार, राम के पिताजी के गाड़ी में, राम के पिताजी के गाड़ी में। और एक एग्जांपल, विकास के गाड़ी में, विकासच्या गाडीमध्ये, तो विकास कार नहीं लिखना है। और यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है, यहाँ पे अगर ऑलरेडी कोई स्पेलिंग है, अंत में यस है, तो दोबारा यस नहीं लिखना है, वहां पे ऑपोस्ट्रोफी दे के कार आपको लिखना है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे और एक इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, इन कार ऑफ राम, इन कार ऑफ राम्स फादर, इन कार ऑफ विकास। तो यहाँ आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। टीचरों में से कौन सी टीचर, तो यहाँ पे विच का यूज होगा। कौन सी टीचर, अंकिता टीचर, वैशाली टीचर, सोनिया टीचर, कौन सी टीचर, ओके। किसकी टीचर, यहाँ पे हुज का यूज होगा। किसकी टीचर, रानी की टीचर, राजू की टीचर, या किसकी टीचर, यहाँ पे हुज का यूज होगा। यहाँ पे होम का यूज हो सकता है, किसको, वॉचमैन को, किसान को, या और किसको। हमने पीछे डे 1, डे 2, डे 3 ये हमने देखा है। अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3 याद किया होगा तो आपको ये पेपर, टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ के दिखाऊंगा, आपको हिंदी में या मराठी में उसका आंसर बताना होगा। तो यहाँ 125 शॉर्ट क्वेश्चंस और 125 शॉर्ट सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं वन बाय वन इंग्लिश में पढ़ूंगा, आपका काम होगा आपको सॉल्व करना है हिंदी या मराठी में, ओके। शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स या सेंटेंसेस।
Number one, whom? To Ganesh. For whom? For Ganesh. From whom? From Ganesh. For whose mother? For Ganesh mother. From whose brother? From Ganesh brother. To whose sister? To Raju's sister. Except whom? Except Raju's uncle. Near whose house? यहाँ पे हाउस और होम, हाउस मतलब भाड़े का हो सकता है, अगर यहाँ पे होम है, होम मतलब खुद का, हाउस मतलब भाड़े का किराए का हो सकता है, दोस्त का, फ्रेंड का, काका चाचा, जिसका घर है वहां पे आपको बोलना है हाउस, लेकिन खुद का घर है तो होम बोलना है, ये आपको याद रखना है। नियर हुज हाउस? नियर कोमल्स हाउस। इन फ्रंट ऑफ हुज फादर्स होम? इन फ्रंट ऑफ विजय's फादर्स होम। टिल हुज होम? टिल विजय's होम। हुज फ्रेंड? Rani's friend. Which friend? This friend? That friend. To whose friend? To Rani's friend. Whose friend's brother? Rani's friend's brother. Which boy? This boy? That boy. To which boy? To this boy? To that boy. Whose boys? These boys? Those boys. Whose boys? My uncle's boys. Behind which boy? Behind that boy. इन विच राजू शॉप या इन विच शॉप ऑफ राजू, दोनों का मीनिंग सेम है। इन दिस राजू शॉप, इन दैट राजू शॉप। आउट ऑफ हुज डोर? आउट ऑफ सोनियास डोर। हु? फ्रॉम हुज विंडो? फ्रॉम संजूज विंडो। बिकॉज ऑफ विच योर चाइल्ड? बिकॉज ऑफ दिस योर चाइल्ड। विच टीचर? एन इंग्लिश टीचर। To which teacher? To Mona teacher. By which teacher? By Komal teacher. Of which teacher? Of Komal's teacher. Of which teachers? Of their teachers. For which art teacher? For this art teacher. With whose teacher? With Sonal's teacher. In whose teacher's hand? In Sonal's teacher's hand. In front of which teacher? In front of our teacher. Opposite whose teacher? Opposite Komal teacher. Except which teacher? Except Komal's teacher. Because of which Radhika's teacher? Because of this Radhika's teacher. Beside which teacher? Beside that teacher. Backside whose teacher? Backside our teacher. To whose school? To their school. Whose teacher's book? Her teacher's book. Of whose teacher's daughter? Of my teacher's daughter. To which driver? To our driver. With whose brother? With boss brother. Except whose son? Except your son. Which hotel? The hotel, this hotel, that hotel. Whose hotel? Their sister-in-law's hotel. Across which hotel? Across Lata hotel. Out of which hotel? Out of this Lata's hotel. Out of which hotel of Lata? Out of that Lata's hotel. Behind whose brother's boss? Behind my brother's boss. Behind whose boss brother? Behind my boss brother. Under which table? Under that table. On which boss table? On this boss table. Of whose brother? Of Manisha's brother. Of which brothers Manisha's? यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए of which Manisha's brother. Okay? Of this Manisha's brother. यहाँ पे नोट डाउन करना है of which Manisha's brother. Okay? Next. Whose father-in-law's office? Their father-in-law's office. To whose daughter-in-law? To their daughter-in-law.
Opposite which building? Opposite Swati building. Out of whose company? Out of his company. With whose brother driver? With Sita's boss driver. After whose marriage? After Salma's marriage. To whose grandpa? To our grandpa. For whose granny? For their granny. Around which bank? Around HDFC Bank. Opposite which mall? Opposite City Center Mall. Before which bus stop? Before Vijayanagar bus stop. On whose building? On my uncle's building. Between which two shops? Between these two shops. Near whose shop? Near Sunil's shop. In or into which shop? In this shop, in that shop. Till which shop? Till Ganesh shop. Till which Ganesh shop? Till that Ganesh shop. Beyond which river? Beyond Ganga river. In whose farm? In our farm. In whose friend's mobile? In Ram's friend's mobile. Before which garden? Before Om garden or before Om's garden? Because of which building? Because of Sai building. Out of whose uncle's building? Out of Ram's uncle's building. Opposite which building? Opposite Sai Baba building. Of whose building? Of their building. On which their building? On their old building. Behind which hospital? Behind Sanjivani's hospital. In which song of Lata? In old song of Lata. In which Lata song? In new Lata song. To whose bank manager? To our bank manager. From which ICICI bank? From Nasik ICICI bank. Around whose school? Around Nandu's school. After whose school? After your son's school. Beside whose school? Beside her daughter's school. About which college of Vijay? About Mumbai College of Vijay. From where to where? From here to there. Around which station? Around Delhi station. Out of which college? Out of Kekewa College. Whose college student? Our college student. To which college students? To Mumbai's college student. Next which station? Next this station. Next to which station? Next to Nashik station. Before which station? Before Pune station. In which hospital? In medical hospital. Which patient of Dr. Patil? With this patient of Dr. Patil. With which Dr. Patil's patient? With Dr. Patil's patient. Which patient of Dr. Patil? That patient of Dr. Patil. Next to which ward number? Next to 6 ward number. Till whose house? Till Vijay's customer house. From whose uncle's home? From your uncle's home. Near whose uncle's friend's house? Near our uncle's friend's house. For which car? For that car. For whose car? For Sharma's car. By which car? By this car. Out of which post office? Out of Vijay's post office. Out of which gate of neighbor? Out of that gate of neighbor. About whose family? About his wife's family. In whose mobile? In her classmate mobile. On which light bill? On this light bill. In which film of Akshay Kumar? In Akshay Kumar's Khiladi film. Before which song of Amitabh Bachchan? Before this song of Amitabh Bachchan. In which your book? In my mathematics book. After whose decision?
after government decision. Behind which bus? Behind Kolkata bus. In which their company? In their old company. Beside whose table? Beside Shankar's table. Whose brother's business? Our sir's brother's business. On which ground? On Ganesh ground. For whose marriage? For Kavita's son's marriage. After which your exam? After my final exam. Okay, finish. Now, short sentence or short negative sentence. Short negative sentence. यहाँ पे नेगेटिव करना है तो उनके पहले नॉट का यूज होगा तो ये शॉर्ट नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे. टू गणेश, नॉट टू गणेश, टू राजू. फॉर स्कूल, not for school, for college. In shop, not in shop, in mall. With friends, not with friends, with enemies. After meeting, not after meeting, before meeting. On table, not on table, under the table. Behind home, not behind home, in front of home. English speaking home tuition. Private classes for all age group available in Mumbai. Contact for more details